Yes, students, today we will discuss about the concept of financial leverage. So let us start. So first of all, we'll see the basic definition. What does the definition say about the financial leverage? So it's written that financial leverage, also known as leverage or gearing, refers to the use of borrowed fund, debt to finance the acquisition of assets or investment with the goal of increasing the potential return on investment. Now you see, students, financial leverage basically means whenever the company has to invest or increase the investment in the company, so it has two routes. The first route is to borrow the funds through the equity market, and the second is to borrow the funds from the debt market. Okay, so financial leverage basically means whenever company has decided to raise the funds from the capital market, instead of using the equity funds, okay, or instead of using the equity shares, it is going for a loan fund. Now how does it helps? Basically, when we are using the debt funds or the loans, so it keeps the number of equity shares low. By doing this, the profit is distributed among the shareholders who are less in numbers, and this will increase the earning per share of those shareholders. Okay. However, it increases the potential return on an investment, but on the other hand, there is always a risk side of it. Okay, what is the risk? Risk is that in case the company is not being able to earn a substantial return to pay off its debt, then the company will be under a risk of uh, going through a liquidation. Okay, so let me explain the concept in Hindi for those who, for the Hindi medium students. कि जब भी किसी कंपनी को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास दो सोर्सेज होते हैं जहां से वो पैसे लेके आती है. पहला सोर्स है इक्विटी यानी कि शेयर इशू करके, दूसरा सोर्स है बाई द इशू ऑफ डेट यानी कि लोन लेके. अब लोन इट कैन एक्वायर बाय इशूइंग डिवेंचर्स, या वो लोन ले सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनेंशियल बैंक्स. ठीक है. सो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, वो शेयर इशू नहीं करती है, वो या तो लोन लेती है या तो डिबेंचर इशू करती है. इससे इक्विटी शेयर के नंबर्स बढ़ते नहीं है लेकिन लिमिटेड रहते हैं. और उससे क्या होता है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट कम शेयर होल्डर्स में होता है, इसलिए हर शेयर होल्डर को ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट या ज्यादा शेयर ऑफ डिविडेंड आप कह सकते हैं मिलता है. ठीक है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट by taking a simple example. Now here it's written, suppose there is a company known as ME Textile Limited and it wants to raise a capital of rupees 5 lakhs. अब क्या है, इस कंपनी को जो है 5 lakhs रुपीस की जरूरत है फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान. वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है. इट कंसीडर्स टू ऑल्टरनेटिव. अब दो तरीके से ये 5 लाख रुपए वो रेज कर सकती है. कौन कौन से दो तरीके? प्लान वन, टू रेज ऑल द फंड्स थ्रू द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय इशूइंग 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10. सो यहाँ पे क्या कर सकती है, 50,000 शेयर 10 रुपए की इशू करेगी, 50,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10, तो उसको 5 लाख रुपया मिल जाएगा. द अदर वे इज प्लान नंबर टू, टू रेज 2,50,000 टू द इशू ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स. तो या तो वो ये कर सकती है कि 2,50,000 के लिए 25,000 इक्विटी शेयर इशू करे, 25,000 इंटू 10 यानी कि 2.5 लाख हो जाएगा, 2,50,000, एंड टेक अ लोन ऑफ 2,50,000 एट ए इंटरेस्ट ऑफ 15%. और जो बचे हुए 2.5 लाख है उसका 2,50,000 उसके लिए वो लोन ले सकती है. अभी सिनेरियो में हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज 50%. सो व्हाट, हाउ विल दिस इफेक्ट द रिटर्न ऑफ द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है, रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स पे कैसे जो है इम्पैक्ट करेगा. नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल. सो दो फर्म है, ऑल इक्विटी और डेट इक्विटी. नाउ वी कंसीडर कि दोनों की प्रॉफिट जो है सेम है, क्योंकि दोनों सिमिलर कंपनी है. डिफरेंस क्या है, एक ने लोन ले रखा है, एक ने लोन नहीं ले रखा है. ठीक है. द प्रॉफिट रिमेन सेम, दैट इज 1,20,000. द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू जो है सब्सट्रैक्ट इंटरेस्ट. सो वी विल सब्सट्रैक्ट इंटरेस्ट हियर.
So interest is 0 for all equity and 37,500 for debt equity. Now how 37,500 for debt equity? 15%, 15% डाउन 2,50,000, क्योंकि 2,50,000 का लोन लिया हुआ था. ठीक है. ओके. तो इसमें दोनों में से हमने सब्सट्रैक्ट किया. सब्सट्रैक्ट करने के बाद वी हैव गॉट अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज 1,20,000, क्योंकि जीरो सब्सट्रैक्ट हुआ है. एंड देन 82,500, that means 1,20,000 minus 37,500. Okay, so this is the earning before tax. Now as already given in the question that the tax rate is 50%, so tax 50% इसमें से हम घटाएंगे, that is 60,000 of for 1,20,000 and 41,250 for 82,500. Then we will get E80, that is earning after tax. That means tax has been deducted. So 60,000, that means 1,20,000 minus 60,000 is 60,000, and 82,500 minus 41,250 is 41,250. That is our earning after tax. Now let us see the number of shareholders. Number of shareholders कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 50,000 है, क्योंकि हमने पूरा पैसा इक्विटी शेयर से रेज किया था. So because since we have raised the entire fund through the issue of equity shares, the number of shareholders stands as 50,000. But in this case हमने तो सिर्फ 25,000 शेयर इशू किया था, and rest of the 2,50,000 we have taken loan. ठीक है. So यहाँ पे number of equity shares will be 25,000. Now let us calculate earning per share. So of course this is the earning 60,000, 41,250, and the number of shareholders are 50,000, 25,000. We'll just divide earning after tax by the number of shareholders. So 60,000 divided by 50,000, so that is equal to 1 rupee 20 paisa. But 41,250 divided by 25,000 is 1.65, yani 1 rupee 65 paisa. So we see that the earning per share, that means for per shareholder, the earning has increased when we are using debt equity funds. Okay. So you see by the use of financial leverage. So यहाँ पे financial leverage हम लोग use कर रहे हैं. That means we are using debt equity funds, and now the earning per share has increased to 1 rupee 65 paise in the case of debt equity funds. So what is the return on equity? For this it is 12%, and for this it is 16.50. How do we calculate? We calculate it by 60,000 divided by 5 lakhs, and in this case it is 41,000 divided by 2,50,000. That is our return on equity. Okay. So student, just give me 1 second. I just need to check whether my recording is still on or not. Okay, recording is going on, but my this camera is not working. Okay, let us continue. Now a very important concept here is indifference point. So financial leverage में ये एक बहुत important concept है. बिना इसके हमको financial leverage समझ में नहीं आएगा. So what is the indifference point? Okay. अब आप कहेंगे सर आपने एक नया टॉपिक उठा लिया. एक्चुअली ये नया टॉपिक नहीं, इट इज अ कनेक्टेड टॉपिक. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल लीवरेज बेटर, you have to understand the concept of indifference point. So let us first read out the definition. The definition says that the indifference point in financial leverage refers to the level of earning before interest and taxes, that is EBIT, at which two different financial options result in the same earning per share of a company. यानी कि ये एक ऐसा EBIT है जिसमें चाहे फाइनेंशियल लीवरेज हो या फाइनेंशियल लीवरेज ना हो, इन दोनों कंडीशन पे अर्निंग पर शेयर एक हो. अब इस तरीके से पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा. लेट अस टेक वन एग्जांपल. सो फॉर द एग्जांपल फर्स्ट वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट. ठीक है. So the indifference point is calculated by using the following formula: n1 divided by n1 minus n2 into interest, where n1 is equal to number of shareholders before leverage. बिना लोन लिए कितना number of shareholders था? n2 is equal to number of shareholders after leverage. यानी कि leverage लेने के बाद what is the number of shareholders? हमारे जो पिछला एग्जांपल था, as per the previous example, the indifference point will be N1 कितना था? 50,000, and N2 was 25,000. This was the number of shareholder before leverage, and this was the number of shareholder after leverage. And the interest was 37,500. Okay.
Now let us control the let us calculate the indifference point. 50,000 divided by 50,000 minus 25,000 into 37,500. So this will come 50,000 divided by 25,000, that will be 2. 2 into 37,500 will be 75,000. Now let us continue. Now if the earning before interest and tax is 75,000, now because this 75,000 is the EBIT. Now note student here, a very important point, EBIT will change when these three factors will change. What are these three factors? First is the number of shareholders before leverage, number of shareholders after leverage, and the interest rate. If these values are will be changed, the your indifference point will also change. So you see here, now as per the previous example, the value that we already had, we have calculated EBIT as 75,000, and this is the indifference point. We will deduct the interest for the all equity will be 0, for the debt equity 37,500 as we have calculated in the previous question. Okay, then we will receive earning before tax, that is EBT. EBT is 75,000 and this is 37,500. Okay, less tax rate is 50%, so 50% of 75,000 is 37,500, and 50% of 37,500 is 18,750. Now we will deduct this tax and then we will get EAT, that is earning after tax. So earning after tax is 37,500 and 18,750. Now we know that the number of shareholders, we already know N1 was 50,000 and for this it was 25,000. Now we will divide it to calculate earning per share. So it comes out to be 0.75 paise and 0.75 paise. Okay, so both are equal when the EBIT is 75,000. So let us go to the definition again. What does it say? The indifference point in financial leverage refers to the level of earning before interest and tax at which two different financial options result in the same earning per share. So here we see that the earning per share is same, but at what EBIT? 75,000 EBIT. बोथ द इंडिफरेंस पॉइंट इज सेम, यानी कि अगर अर्निंग जो है 75,000 होगी तो फाइनेंशियल लीवरेज लेने का कोई फायदा नहीं होगा. लेट अस कंटिन्यू. अगर हम मान जाएं सपोज अगर अर्निंग हमारी इंडिफरेंस पॉइंट से कम हो जाएगा तो क्या होगा. सो सपोज 75,000 से भी कम अर्निंग हो जाएगी, दैट मीन्स 50,000 हो जाएगी, तो क्या होगा. सो आई हैव टेकन टू सेट्स, आई मीन टू सेट हियर. One in the one pair I am using 75,000, another pair I am using 50,000 as earning before interest and tax. So देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. When it is 75,000, earning per share is same, but when it is 50,000, we are using the same calculation step as before. ठीक है, इंटरेस्ट घटाएंगे, फिर जो है टैक्स घटाएंगे और फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर से. लेकिन यहाँ देखिए इन ऑल इक्विटी प्लान जो अर्निंग पर शेयर है इट स्टैंड्स एज 50 पैसा पर शेयर होल्डर, बट इन केस ऑफ डेट इक्विटी इट इज रिड्यूस्ड टू 25 पैसे. दैट मीन्स कि अगर 75,000 से कम अगर हमारी अर्निंग होगी तो फाइनेंशियल लीवरेज लेने से हमें नुकसान हो जाएगा. दैट मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज सिर्फ रिटर्न नहीं बढ़ाता है लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है. दैट मीन्स इन एनी गिवन सिचुएशन अगर हमको इस कंपनी में इफ वी हैव टू टेक लोन और वी हैव टू यूज फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, एक ही बात है, तो वी हैव टू एंश्योर कि हमारा रिटर्न 75,000 से ज्यादा होना चाहिए. इफ आवर रिटर्न इज लेस देन 75,000 तो फाइनेंशियल लीवरेजिंग करने का कोई फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट अस कंपेयर ऑल द सिचुएशन व्हेन द अर्निंग इज अबव इंडिफरेंस पॉइंट. तो इंडिफरेंस पॉइंट 75,000 है और अर्निंग हमारी ज्यादा है, दैट मीन्स 1,20,000. उस केस में डेट इक्विटी कंपनी हमें ज्यादा रिटर्न दे रही है एज पर ऑल इक्विटी कंपनी, यानी कि ऑल इक्विटी कंपनी से ज्यादा रिटर्न हमारा हो जा रहा है. लेकिन अगर इफ द रिटर्न्स आर बिलो इंडिफरेंस पॉइंट देन वी आर गेटिंग लेसर रिटर्न देन द ऑल इक्विटी फर्म. ठीक है. So I hope now you understand what does it mean. So the indifference point, the financial leverage means using the debt funds in order to increase the earning per share.
but it should be done only at a point when the company is earning a higher return than the indifference point. I hope that clarifies the concept to all of you. Okay, so that's all from my side, students. Take a note of this, okay, and prepare well for your exams. Thank you.